इतना हैप्पी कि मुझे म्यूट ही कर दिया भाई अपने आप को। लेकिन हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। यस, इट इज अ डे जहां पर हम बैंटर, मजाक, मस्ती डेफिनेटली करेंगे। देयर इज लॉट्स टू बैंटर। यस, ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आप लोग कुछ तो नहीं होगे, नॉट इन अ गुड मूड, लेकिन कहीं ना कहीं इन गुड स्पिरिट वी विल बी टॉकिंग, और सीरियस चैट होना चाहिए। मतलब एरिक टेन हाग इज अ प्रोजेक्ट इन हिमसेल्फ ब्रो। दिस गाय इज नेक्स्ट लेवल। कॉन्फिडेंस कोई जिंदगी में किसी को चाहिए ना, किसी को भी कॉन्फिडेंस चाहिए ना। एरिक टेन हाग का देखो भाई, हर एक इंटरव्यू देखो, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। मतलब मैं यहाँ पर स्ट्रीम शुरू होने से पहले उसका इंटरव्यू जानबूझ के वापस से जस्ट अबाउट फोर्थ टाइम देखा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग टू ऑल, ऑब्वियसली अबाउट अदर टीम्स एज वेल, बिकॉज आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल है, टू पोटेंशियल टाइटल चैलेंजर्स। विल बी ब्रेकिंग दैट डाउन कि व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन। Are Liverpool really the favorites, or is it just a kind of dark art scheme by Arsenal fans or media like? Lekin of course Chelsea bhai, great victory, of course back to winning ways, but can we get to winning ways in Premier League again? Because last weekend we lost to Liverpool and this weekend we have Newcastle. Yes guys, सबसे पहले बोल रहा हूँ, yes it's a big weekend, lots to discuss. There are crazy games. El Clasico 100%. एल क्लासिको के लिए सेपरेट हम करने वाले से पहले कि लोग सोचे वी आर नॉट कवरिंग इट, एब्सोल्युटली वी आर कवरिंग इट। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, इट इज ऑन द वे, बट आल्सो वी आर हैविंग अ स्पेशल गेस्ट यहां पर फ्रॉम मिलान। यस, देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट सीरिया एज वेल, जो हम हमेशा करते हैं। भाई सब लोग लेट मी नो हु ऑल आर इन द चैट। वेलकम टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। शुभदीप जो ज्वाइन किए हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट दैट फॉर श्योर। यस, कमाडा इज वन स्टोरी जो हम भूल नहीं सकते। लेकिन अभी के लिए आई थिंक भाई सब लोग कम ऑन, विद ऑल डू रेस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तो यून मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल से भाई ये था क्या? मतलब पहले यूरोपा लीग के शुरुआत से पहले, मतलब चलो ठीक है, आई गेट इट कि यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ रिकॉर्ड इन यूरोप, आई टोटली गेट इट, आई टोटली बाय दैट। मैनचेस्टर यूनाइटेड, एरिक टेन हाग आर अ ट्रस्ट इन प्रोसेस वाला फेज। बट कितना कितना लंबा भाई, यूरोपा लीग शुरू हो गया, 2 ड्रॉज निकाल लिए, वो भी कैसे निकाला हमने डिस्कस किया है, लिटरली ब्रोक इट डाउन, राइट? थर्ड ड्रॉ वापस से, मतलब ड्रॉ मर्चेंट्स टू द नेक्स्ट लेवल। और थर्ड ड्रॉ से पहले एरिक टेन हाग इन द इंटरव्यू व्हाट डज ही से? एरिक टेन हाग बोलता है भाई साहब देखो ऐसा है ना, Mourinho great and Mourinho will do great and so will we definitely because Mourinho has won trophies and so have I। मतलब ये कौन सा डेल्यूटेड इंसान ऐसे बोलता है भाई? मतलब कॉन्फिडेंस एक चीज होती है, लेकिन नेक्स्ट लेवल ओवर कॉन्फिडेंस। एंड देन यू बेसिकली अब जो प्रदर्शन किया, वाव वाला प्रदर्शन किया इन द ऑन द पिच, भाई टू बी ऑनेस्ट फ्रेड में एक्चुअली बीइंग रिमाइंडेड दैट ही इज अ ब्राजीलियन वाला फेज आ गया है। और आफ्टर दैट to, and I understand European ties एक चीज हुआ करती थी, always it used to be difficult away ties. I'm not going to take it for granted being someone who's watching European ties from 90s, but honestly even the best of the best OG football fan would say कि भाई that game के performance के बाद you cannot say when you take 2 points at Porto and Fenerbahce away, it shows we are a team that hard to beat. घंटा भाई, घंटा, बड़ा वाला घंटा। I don't know how many of you will agree with that. Let me know. Any Manchester United fans, I would love to hear from you. Absolutely, हम यहाँ join भी किए गए, I believe on the backstage. There are people, Arsenal fans have joined by the way. But again, people let me know in the chat who all are in. Would love to know. Again, subscribe if you're new to the channel. Doesn't take a buck. एक सेकेंड मैं देख रहा हूँ। Okay, I believe maybe people are just about joining. It's a Friday evening. They don't want to spoil the mood. But yeah, हंसी मजाक भी होगा. Of course, tactical analysis तो होगा. But let's actually join in. The people who are supposedly title challengers potentially. I don't know. मतलब the big question यहाँ पर first time in the house. Parth, welcome to Almighty Hello, Blues hello, FC. hello, hello, hello. ग्रेट टू सी यू। ऑफ कोर्स पार्थ को पार्थ का हमें इंट्रोडक्शन मिला था फ्रॉम द अदर गाय, द हीरो भाई सुचित इज बैक, ऑफ कोर्स बैक टू द बैंक होपफुली। लेकिन यहाँ पर नितिन ज्वाइन कर लिया, आदित्य ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सुचित भाई, वी विल कम टू आर्सेनल लिवरपूल, ऑफ कोर्स आयुष भी ज्वाइन हो रहे हैं जस्ट अ मिनट एज वेल। लेकिन सुचित आई वुड लव टू नो Eric Ten Hag, bro, matlab, we all have those personal struggles in life. I think Eric Ten Hag, matlab, we have seen managers protecting their teams, but this guy really want to know what does he have? You think, right? Daily क्या खाता है भाई ये? Before I say anything, hey guys, hello to the Almighty Blues family again. Thank you so much for calling me back to this to the channel. Coming back to the topic, Eric Ten Hag.
I think he fits the mentality of all Manchester United fans out there. Very deliberate, very stuck in the bag and stuck that, okay, we are this, we are that. Like all the big news that they always talk about, oh, we have the best midfielders, we are the best defender, we are the best striker, and somehow they're not the best in the team, best team in the league. And he suits their mentality in all honesty for me. And I'm glad he's there. Like Eric Ten Hag at the wheel. Like I'm so for it. यहाँ पर सच्ची से लाइक दिल की बात बोल दिया भाई जल्दी से। पार्थ अगेन एज एन आर्सेनल फैन मतलब ऑब्वियसली दीज आर गुड टाइम्स लुकिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रगल येट अगेन। लेकिन इज इट लाइक वो बोलते हैं ना मतलब इट्स अ स्टॉर्म बिफोर इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ जस्ट अबाउट बिफोर द बिग बिग स्टॉर्म मतलब वो वाला सीन है पार्थ। व्हाट आर योर थॉट्स बिकॉज प्रोसेस कितना लंबा मतलब इज इट समथिंग व्हिच इज दे आर अनलकी आर द प्लेयर्स टू ब्लेम क्या हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में? पहले तो बहुत बड़ा for letting me join in and यानी आपके साथ आना it was a big deal for me and coming back to United अभी the thing is trusting the process would have made sense if we could actually see some progress मतलब in terms of trophies yes they've won a Carabao Cup and the FA Cup but let's be real वो ऐसा serious trophies है नहीं and the way they've been playing with all the signings that Ten Hag has been given. All of the players playing are Ten Hag signings. And देखो अगर उसको बैक करना है तो आई कैन बैक समवन हु इज सेल्फ अवेयर. That guy is not aware of himself, is not aware of the position his team is in, and he's not ready to accept his flaws. That is the issue. मतलब देखो मतलब trusting the process would come once we know that we are shit and we have to bet ourselves. But in case of United it is हम बहुत अच्छे हैं हमको कोई हरा नहीं सकता लेकिन हम कोई जीत भी नहीं रहे. You're getting me? वो वैसा Yeah. वाला सीन हो रहा है. वाओ इंटरेस्टिंग कमेंट्स देयर फॉर श्योर भाई। यहाँ पर दिख रहा है मतलब अगेन टैक्टिकली विल ब्रेक इट डाउन एज टू व्हाट वेंट रॉन्ग इन दैट गेम और आर वी बेसिकली टेकिंग Jose Mourinho's Fenerbahce too lightly because they have to get the crediting credit for sure. यहाँ पर आदित्य बोल रहे will not get surprised if Ten Hag writes his own biography soon. शनाया बोल रहे यहाँ पर ETH जैसा stubborn deluded manager यूनाइटेड को सूट नहीं करता. सॉरी भैया मैंने लास्ट सीजन नो प्रॉब्लम इस चोमू को बैक किया था. शुभदीप बोल रहे I actually don't want Premier League so would you guys discuss Newcastle like I have heard. Shubdeep it is a live stream मेरे भाई. Big ups to you and each and every one who's a new subscriber as well. Anyone who's watching here would love it if you hit that like button. अगर नहीं तो feedback on the bottom and the description. These live streams weekend का war footy wars we do literally every week which is back but hopefully with your love and support we kind of discuss each and every match. Otherwise we will just do a video. Again I repeat El Clasico preview video is coming out in the morning but in this stream we are discussing an entire EPL and what has happened in UECL as well as UEL last night और जो होने वाला है in the Serie A as well. तो lots of it to discuss. लेकिन अगर मैं quickly अपने 2 cents दूं मतलब again I know generally about what has been happening in the last few weeks you can try and only discuss. लेकिन इस गेम में honestly मतलब the biggest deluded part was Mazraoui. अब Mazraoui देखो I rate him as a footballer. Don't get me wrong. I really rate Mazraoui as a footballer. लेकिन आप Mazraoui को बोल रहे हो कि भाई तू नंबर 10 खेल. ठीक है नंबर 10 खेल Mazraoui प्लीज. वाई बिकॉज 4 साल पहले मैंने तुझे देखा है भाई तू प्ले मेकिंग कर सकता है. यू आर समवन हु काइंड ऑफ इनवर्ट्स basically from fullback region and you are good on the ball as well as you bring that defensive ability in an away European tie which you are by Trubka Ika. He ये हमारा for people who know Oscar used to play that kind for Chelsea, right? Yeah. That is something that probably you were expecting Mazraoui to do. I get that injuries I totally get it. Injuries है suspensions I get that. Bruno का last match में the red card did not help etc. I totally get it. लेकिन भाई मतलब ऐसा नहीं है कि सडन से यू आस्क अ डिफेंडर जस्ट बिकॉज ही हैज द एबिलिटी इन अ मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम माइंड यू. और एक चीज होती है कि यू सरप्राइज द ऑपोजिशन. भाई ये सडन से भाई एकदम सरप्राइज प्लान व्हाट अ मास्टर प्लान निकाल दिया है वो एक चीज होती है. बट दिस इज लाइक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना व्हेन यू हैव अ अमाद डियालो. ठीक है अमाद डियालो इज देयर. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली सॉ द अमाद डियालो का सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली हिज जस्ट हिज एक्सप्रेशन
मतलब द गाय वाज लाइक भाई मुझे अभी क्या अभी घर जाना है भाई, मुझे घर जाना है, बस छोड़ दो मुझे. दैट इज हाउ इट वाज सो बैड. एंड दिस इज अ गाय पीपल हु डू नॉट नो. भाई अगस्त में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर ऑफ द मंथ, एंड दैट्स व्हाट इट वाज. एंड अगेन, व्हाई आर वी डिस्कसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट? बिकॉज आई थिंक वो बनता है एज मच एज दे आर प्लेइंग वेस्ट हैम इन द वीकेंड. मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, अब देखिए व्हाट एन एक्सप्रेशन ब्रो, मतलब क्या ही बोले. लेकिन यहाँ पर लाला भी ज्वाइन कर लिया. लाला व्हाट्सअप मेरे भाई, व्हाट्सअप. All good, all good. The feeling is good seeing Manchester United like this. If you're a Liverpool fan, for sure, Lala. Oh yes, कल मैं ऑफिस इवेंट में था, जस्ट स्कोर लाइन पे भी साथ के साथ नजर थी. जब 1-0 था यूनाइटेड का, लगा ठीक है निकाल लेगी, बट बाद में मेरे को ध्यान आया वहां पे तो मुरीनियो बैठा है सामने, इतना इजीली जाने नहीं देगा. एंडेड अप इन अ ड्रॉ एंड आई वाज वेरी हैप्पी. चाहे ऑफिस इवेंट में खाना नहीं मिला, बट मेरा पेट ये स्कोर लाइन देख के भर गया था. अगेन भाई मैं देख रहा हूँ जान, हमारे पास भाई ऑल टू रेस्पेक्ट लॉट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड सब्सक्राइबर्स आर देयर. आई नो दैट आप शायद टाइटल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई डोंट नो, मे बी बैंटर. लेकिन साथ में भाई दिस इज बैंटर व्हिच प्रोबब्ली इज नॉट दैट यू नीड, बट दीस आर फैक्ट्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड एज वेल. ये एवे नहीं है भाई, एवे नहीं है. मैं देख रहा हूँ शराय के कमेंट्स यहाँ पर. एरिक 420 हाग, आई नो व्हाट 420 यू आर रेफरिंग टू. वो क्या, मैं वही सुचित से पूछा ना, क्या लेता होगा भाई, मतलब हमें भी दीजिए यार. मतलब वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का. माजरावी प्लेइंग 10 इज जस्ट एज नॉनसेंस एज डी मरिया प्लेइंग लेफ्ट बैक इन वैनगार्ड era. This United does something to manage us unless Saf utter work shit. Bhai, honestly, you have to agree. Bhai, to be honest, are you all ready for a tribute to the guy? Let's give Eric Ten Hag a tribute. क्या बोलती जनता? Are you ready, Suchit, Parth and Lala? Yeah. Let's all फ्लैग भी नहीं हो तो. चलो भाई, get ready for a tribute everyone. ठीक है? Stick to the plan. What's the plan? The plan is huge. Tell us what the plan is then. The plan will be the same. We stick to the plan. You have to stick to the plan. Stick to the plan. We have to stick to the plan. Stick to the plan. Stick to the game. Stick to the plan. Stick to the belief. Stick to the plan. Stick to the rules. Stick together. We stick to the plan. Stick to the plan. Stick together. Stick together. And stick to the plan. What's the plan? Stick to the plan. So what's the other plan? इसका प्लान ही बनते रहेगा तब तक भाई. प्लान हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट tenure of say the other clubs which are competing. But again, it's not against Manchester United, guys. It's against Ten Hag. Remember, भाई मैं यहाँ पे disclaimer देना पड़ता है मुझे तो. Being a Dutch fan as well, the guy is like deluded become now. ये बंदे में कॉन्फिडेंस तो है, मतलब ये ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मतलब बंदा बोर्ड रूम में भी जाके बोलेगा ये कंपनी मैच ला सकता हूँ. मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस है इस आदमी में. मतलब मैं सोचा कि इट्स अ लैंग्वेज इश्यू. बंदा बोल रहा है भाई Mourinho will be happy and I'll be also successful and Mourinho has also won trophies and I also won trophies. मतलब उसका कहने का तात्पर्य क्या था? That was like next level, bro. I actually think that he's doing it on purpose. He wants to get the sack. नहीं तो कोई sane आदमी ऐसे choices करेगा नहीं और ऐसे comments उसके रहेंगे नहीं. मतलब मैं और क्या बोलूं? बिल्कुल भाई, मतलब मेरे को उसी दिन रियलाइज हो गया था जिस दिन इसने आके बोल दिया था पेप और क्लॉप के ऊपर कि एरास कम टू एन एंड. मैंने कहा ये अपनी नैया खुद ही डुबाएगा. Yeah, crazy, absolutely. लेकिन guys, again, Manchester United have got the draws now. Literally, they are what? Again, मतलब इसमें हमने बात कर लिया about अमार डियालो, non-usage almost of him. एंटनी बेचारा आता है और इंजर्ड हो जाता है भाई, वो तो अलग ही लेवल का है. Then basically, again, मतलब आप माजरावी पॉइंट बोल दो. But the point being that अभी on a serious note, Manchester United in the Europa League are like, wow, they are like literally 20th. Crazy. 21st भाई, एक सेकंड, सॉरी ज्यादा प्रमोट कर दिया मैंने. लेकिन I don't know, मतलब यूरोपा लीग is all of a sudden become more interesting. हम कॉन्फ्रेंस लीग पर भी आएंगे थोड़ा बहुत before we go to the Premier League. But again, Suchit, if you have to tell me, the Europa League, basically now the format has 8 matches. I think they should be still good if they kind of come to realization of team selections etc. Do you realistically see them not getting through? मतलब एक साल में उन्होंने शायद एक भी गेम नहीं जीता है, something like that, some crazy stat है. So yeah, I mean they need to be in the top 24, right, to qualify for the knockout round, at least to qualify for the knockout round. Correct, to have a chance.
Yeah, and to assume that they played two of their big teams. One is Fenerbahce, and I think they're supposed to play one other big team, if I'm not wrong. Do you have the Yeah. list of the teams that they're supposed Yeah, to I'll play? probably pick it up. Not like I remember the back of my mind, but basically speaking, उनके Mm, fixtures भी, to be honest, and that's a good point, क्योंकि I think fixture list mm. generally is not kind to them as well. Again, हाँ West हाँ Ham this weekend, which we can mm, discuss and predict as well. लेकिन कहीं ना कहीं West Ham का form तो Manchester United से भी बुरा है for sure. Yeah. Then they have mm, Leicester, Chelsea, and मैं अभी भी लिखकर बोल रहा हूँ guys, Chelsea fans, we will be talking about us. Manchester United versus Chelsea, don't be surprised if they really turn up in that game. I know ये gut mm, feel बोल दो जो भी बोल दो ये that happens at Old Trafford for years, mm, whatever mm. reason being, right? But then they should kind of win a couple of matches around it. I believe Leicester and Ipswich games, and then Bodo Glimt is one that I see. But it's at home. I think home fixtures probably should be saving them. लेकिन वो ये Eric Ten Hag अगर next couple of games में victories नहीं लेता है ना, all of a sudden Old Trafford crowd will turn against him for all we know, right? And then the Oh, big wait, game, it's not. It big has games not to yet turned discuss. up against him. Oh, I, next I, level, I bro. I mean, the situation is so bad that the fans are not even being there in the stadium to even boo him. So I guess it makes sense. बिल्कुल बिल्कुल भाई यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर कुवर ज्वाइन कर लिया भाई बिग अप्स टू हिम फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो गाइस शाउट आउट है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड Hello, फैन buddy. को अभी लाइव आना समथिंग विच आई दैट टू इन शॉर्ट नोटिस मैंने बुलाया है ऑफ कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है आई हैव बीन देयर भाई ना लास्ट ईयर हम रह चुके ऑलरेडी बट हम उसी टॉपिक से शुरू किए एंड व्हाट डू यू थिंक मतलब आई वुड लव टू नो योर थॉट्स ऑफ कोर्स हमने बात किया था ब्रीफली लेकिन राइट नाउ मतलब कल के मैच के बारे में बोलो तो व्हाट डू यू थिंक मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग इन हिज हेड भाई और कुछ नहीं है मतलब और आर द प्लेयर्स अगेन टू ब्लेम क्योंकि व्हाट वाज दैट परफॉर्मेंस यार सबसे पहले तो लाइक हाई टू ऑल द पैनल नो मेंबर्स एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन यूनाइटेड पे बात मैं मतलब घंटों कर सकता हूँ यार और रात की लाइनअप पे सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा था अब कोई गांजा फूक के कोई उसने लाइनअप उतारी थी मुझे तो लगता है वो कोई मुझे समझ नहीं लग रही थी यार मजरोई एज नंबर 10 मैं अपना दिमाग सर दीवार में मारने वाला था यार व्हाट इज ही थिंकिंग व्हाई यार यू आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ लेफ्ट बैक्स एंड राइट बैक्स and you are putting a left back as a number 10. I don't think so. How does it make any sense? You have Eriksen playing, who is a proper number 10. He has given you all so many goals और उसका बहुत top form चल रहा है. And you have Casemiro on the bench. Why don't you start Casemiro and Ugarte together and Eriksen as a number 10? I would never know भाई. मुझे नहीं समझ लगती कि उसके सर में क्या चल रहा है. एक लिंडलॉफ को खिला रहा है, उसकी वजह से हमें गोल कंसीड हुआ. You already have two proper centre backs जिसको आप week in week out खिला रहे हो. Licha Martinez and Delict. Why are you changing the centre back pairing for such an important game? Jose Mourinho away. It's never going to be easy यार. यूरोप में जोजे को हराना वो जैसी मर्जी उसकी जो है वो जो है फॉर्म खराब हो जैसा मर्जी हो वो रिजल्ट निकाल लेता है यार जैसा मर्जी हो वो कुछ ना कुछ भड़वागिरी करके ना वो कुछ ना कुछ कर लेता है तो वो चीज है वो चल रहा होता है बट आई थिंक टेन हैग हैज लॉस्ट इट नो मेरा नहीं ख्याल इट्स टू अर्ली इन द सीजन टू से but the position which United is in the Europa League or Premier League both it's very difficult to say that he will survive after the December till December अगर December तक भी निकाल लेता है तो बहुत achievement होगी मेरा ख्याल है फिलहाल वाओ इंटरेस्टिंग दैट लेकिन चैट बोल रहे भाई शनाया बोल रहे ईटीएच नेवर वाज अ गुड मैन मैनेजर ही इज अ गुड टैक्टिशियन लेकिन उसकी टैक्टिकल फ्लॉज ही बर्बाद कर दिए 34 इयर्स गाय 60 मिनट्स पे खत्म फिर भी पिच पे रहेगा एटसेट्रा मतलब अगेन मतलब बीट मैन मैनेजमेंट बीट इवन द ट्रांसफर्स ऐसा भी नहीं है कि he has not made. I know कि कहीं ना कहीं being a Chelsea fan आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है भाई ये तो 1 बिलियन स्पेंड किया अपने इसके क्लब ने तो ये 1 बिलियन स्पेंड किया लेकिन the point being it's a different context altogether भाई it's a different context you're talking about Manchester United and even as a Chelsea fan I'm sure even Lala here will agree even Arsenal fans would agree कि whatever be it in this century or be it in the Premier League era Manchester United is still the biggest club in England right I don't think anyone would argue that right तो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर पतली गली से हम लाएंगे आयाक्स से पतली गली से लाएंगे डच नेशनल टीम से सब तो भाई आप ऐसा है तो अपने बालकनी में अपने कोर्टयार्ड में खेलो ना मतलब आई एम नॉट इवन अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई एम फीलिंग लाइक ये दिख रहा था एट सम पॉइंट इट्स गोना हैपन आई डोंट नो जस्ट मी व्हाट अ टाइम टू बी अ प्रीमियर लीग फैन ऑफ एनी क्लब बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज व्हाट आई वुड से बट
मैं तो ज्यादा नहीं बोलूं इससे पहले कि यार थिंग्स विल गेट बैक टू मी. पिक अप टू हर्षा, क्या हाल है? People are waiting for El Clasico. I'm waiting for West Ham versus Manchester United, which is El Sacico. Yes, actually West Ham are even worse than that, honestly. But getting into this game, पहले न्यूट्रल से ले लेते ओपिनियन. चलो, मतलब at this point in time it's anyone's guess, लेकिन आई डोंट नो पार्थ, इफ यू हैव टू पिक मैनचेस्टर यूनाइटेड का मतलब बेस्ट टीम फॉर्मेशन, टीम सेटअप क्या होना चाहिए, मतलब what should be their forward line generally speaking? Forward line, given the current form, Hoyland, uh, it should be Hoyland playing up top with Bruno as the cam, attacking midfielder. Right wing पे it will be Rashford and left wing पे Garnacho. Garnacho, right? तो basically आप भी यही बोल रहे हो more or less, which basically every Manchester United fan is saying. Some people are saying that Amad Diallo is actually good enough in terms of form to actually start, but that's debatable. Again, midfield में मतलब one can argue Onana, by the way, we didn't speak about him. Onana और to some extent Ugarte ने actually मतलब save किया था भाई कल मैच, नहीं तो वो भी चल जाते. I don't know, मतलब others in the panel, Lala, do you agree with what Parth said? नहीं, I would play Hoyland of course as a striker, but I won't play Bruno as number 10. मैं Zirkzee को खिलाऊंगा क्योंकि I feel Zirkzee Interesting. के पास जो क्रिएटिविटी है एंड जो उसके पास थोड़ा बहुत विजन है वो ज्यादा अच्छा वहां कर सकता है. एंड मैं उगाटे और ब्रूनो का डबल पिवट खिलाना प्रेफर करूंगा. एंड राइट विंग पे अमाड डियालो एंड लेफ्ट पे गर्नाचो. रैशफोर्ड को अगर मैं अभी ओनर होता मतलब मैं अब टाटा बाय बाय कर दिया होता. आई एम डन विद रैशफोर्ड, इवन दो आई लाइक दैट गाय. उसके पास कंसिस्टेंसी नाम की चीज नहीं है. एंड अगर यूनाइटेड के लिए खेलना यू हैव टू बी लाइक 7 on 10, 8 on 10 एवरी वीकेंड, तो वो नहीं रह पाता है. अदर देन दैट लिंडलॉफ बाहर जाएगा जब लेनी यूरो कम्स इन. एंड मैंने हमेशा से बोला है वो लीचा मार्टिनेज, इवन दो अर्जेंटीना के लिए वो सेंटर बैक खेलता है और काफी सही खेलता है, बट यहाँ पे आई फील लेफ्ट बैक पे ही वुड बी आइडियल इन माय ओपिनियन. एंड राइट बैक पे माजुराई लाया है, उसको वहां ही खिलाओ चुप करके. एंड आई फील लाइक विद अ गुड मैनेजर, जो मैंने अभी टीम बोली, आई फील दे माइट डू गुड. इंटरेस्टिंग. अगेन मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस है राइट नाउ, टू बी फेयर टू देम एज वेल. लेकिन अगेन मतलब सिंपल चीज बोलता हूँ, माजराई को सब जगह खिला दिया सिवा राइट बैक. Correct me if I'm wrong. In this season, he has played everywhere. Mazraoui, सिवाय the position where राइट बैक भी खेला है, राइट बैक भी खेला है, लेफ्ट बैक भी खेला है. Couple of games, he's not really. Yeah, couple of games, but because Dalo cannot play as a left back, he just plays good as a right back. Exactly. तो मतलब तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है. बट माज़राओई ने डेब्यू अपना लेफ्ट बैक किया था, so you can play him as a left back, but he does not try it. अब ट्राई करता है तो नंबर 10 खिला रहा है यार. मतलब मुझे समझ नहीं लगती नंबर 10 खिलाने की क्या जरूरत पड़ी है यार. कमेंट देखो. यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स ना एक पॉइंट के बाद वो नहीं कॉर्पोरेटिव क्लॉज होता है, चल यार महीने कहने पे तनख्वाह तो आ रही है. बस यस, क्या होगा राइट नाउ इट्स द सेम सिचुएशन. मेरा ख्याल है यही चल रहा है भाई. अब तनख्वाह तो आ रही है ना हफ्ते बाद, महीने बाद, जिस टाइम भी, बस जहां खिलाते हो खिला लो, कोई मसला नहीं है. ये इस तरह चल रहा है भाई. सही बात है. Wow, interesting, very interesting this guys. Again guys, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button. भाई आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया पैनल. Of course, big up to the panel to come on short notice. Couple of them for sure, but everyone are tagged below. सब लोग first line the description है, काफी सारे channels है. तो भाई आप देख सकते हो, क्रिकेट लाला है, definitely कैल्सियो चर्चा है, absolutely यहाँ पर kick off conversation है, as well as the football showdown is there as well. चिंतन भाई in the house. चिंतन भाई long time no see, क्या हाल है? Of course आएंगे सेरिया टॉक्स पर भी आएंगे. फर्स्ट प्रीमियर लीग से शुरू किए मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन भाई थोड़ा बहुत कम बैंटर करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बिकॉज वी हैव टू स्विच टू अदर टीम्स एज वेल. लेकिन चिंत भाई, बिफोर वी गेट टू द एक्चुअल कन्वर्सेशन अबाउट आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, न्यूकासल एंड सेरी आ, आपको क्या लगता है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का, इज देयर अ सॉल्यूशन राइट नाउ? अरे यार, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यार. मैं एक्चुअली अभी ट्विटर पे बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मिलान और यूनाइटेड दोनों की कंडीशंस तो बहुत खराब है, क्वाइट सिमिलर पैरेलल चल रहा है. So I saw one meme which said Milan United, you know, यार it's a bit of a mess, you know. थोड़ा ऐसा भी now तो you can't even blame the manager. He has the players he wanted. He's got the transfer market. So I think he's running out of room to complain.
the funny is his press conferences, yeah. The justification he gives, that is very hilarious. You know, hilarious भाई, hilarious. it is मतलब you know एक ऐसा आदमी है जो मजबूर हो गया है अभी. He's just justifying himself. वो same trophy, I have won so many trophies. यार मतलब I think this is a very घिसा पिटा topic जो बोलते थे. एक टाइम पे वेंगर ये बोलता था तो पब्लिक उसको गाली देती थी. So I guess he's run out of topics to talk about. Justifications भी अभी गए. मज़ावरी number 10 जैसे अभी बोल रहे थे. I've seen him play. And आपको पता है रात वाले ड्रॉ के बाद उसने क्या कहा है? रात वाले ड्रॉ के बाद आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? उसने क्या कहा? Yeah, that 3 draws to point against Fenerbahce and Porto. वो तो मैं शुरू से किया था स्ट्रीम एग्जैक्टली. मतलब आप पहले ही नहीं, बाद मैच के बाद में भी उतने डिलीट तो हम तो यहाँ फिगर आउट करें क्या सुनता है. As a Man United manager, you should be ashamed of saying that thing. Yeah, why point at away at Porto and Fenerbahce and you are happy with it? यार, come on, where are the standards? What are the standards you are talking about, भाई? It is very sad to see it is very sad to see because जब भी मैं United देख रहा था, मतलब I still remember Sir Alex used to like lash out at all these things, you know, and it is not to disrespect other clubs, but यार एक club का एक set standard होना चाहिए. When you don that jersey, it is sad. पहले मजाक हो रहा था, of course सब लोग को banter में मजा आ रहा था Man United के सामने, लेकिन I think now it's come to that pity stage. यार you don't want any big club, you don't want any big club to struggle so much. And ऐसा भी नहीं है जैसे other clubs outside EPL में के पैसा नहीं है. They have everything is going, but there's something missing, you know. And I love hearing Roy Keane talk. You know, जब भी वो बोल रहा है कि the players don't understand what it is, तो यार बिठाना चालू कर दो. You know, he's justifying that मैं मजोरी को पहले से जानता हूँ. So that is not a justification to make him play number 10. I understand you're a manager, you can make that call. बस इस justification अभी run out. I think जो भी कुंवर बोला, this was the last straw. When you are saying you're justifying a point against Porto and Fenerbahce, and that also you're playing Europa League, you're not even in the Champions League right now. So what stage you are at, if you're justifying that means कुछ बहुत खराब चल रहा है अंदर. मतलब again Ten Hag in guys, everyone's जब पिछले प्रीवियस मैनेजर्स में से जो सैकिंग के करीब होते थे ना, वो कुछ ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और उसके बाद ऐसी ही लाइनअप्स खिलाते थे जैसे उसने लास्ट या तो आप मतलब जो चिंतन ने बोला अबाउट सर एलेक्स, जोसे मोरिन्यो, मतलब दे यूज्ड टू प्ले विद द मीडिया, वो एक अलग चीज थी भाई. दिस इज टोटली डिफरेंट, एब्सोल्युटली. मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो हेड टू हेड में, ऑब्वियसली वन विल आर्ग्यू दैट वेस्ट हैम हैव हैड अ कपल ऑफ गुड रिजल्ट्स रिसेंटली, तो डोंट बी सरप्राइज्ड. और रिमेंबर उनका भी लेस लोपेटेगी भाई इज रियली डूइंग बैड. वेस्ट हैम का यू नो रियली अप एंड डाउन, रादर डाउन ही फॉर्म. तो वन कैन से ऑलमोस्ट दैट इट इज अ साकी को, जैसे चैट बोल रही थी, for sure it's not going to be easy. Predictions guys, before you go to the next match, of course the main ones, chat bhi boliye. Suchit, what are you going with? West Ham versus Manchester United. It's a Sunday 7:30 p.m. IST kickoff. For football's sake and for the entire fan base, I think West Ham needs to win. No, come on, Manchester United needs to win. Bhai, Ten Hag in. Come on, Ten Hag in, please. Oh, sorry. I mean, I'm proper brain fart. Yeah, wake up. Yeah, it's 7:30 in the morning. My bad. Yeah, I meant Eric Ten Hag and Manchester United to win, not West Ham. पूरा बिल्डअप के बाद सुचीत भाई पूरा मतलब यहाँ पर गुगली फेंक दिया सुचीत ने. But good one. Anyone actually genuinely believing that this can be a West Ham result? Pretty sure Manchester United should get the points, jokes apart. I think it'll be a draw more than I think it'll be a draw. Yeah. Draw? Okay, yeah, interesting guys. I think our recent performances against West Ham away have not been good. We were thrashed, I think, last year, or this is not an easy ground to go and get a result. So मेरा नहीं ख्याल, और with the form we are in, at best I think it would be a draw, मेरा ख्याल है. But yeah, I don't know. This is so unpredictable. I have stopped doing United previews, you know, because ऐसी टीम समझ नहीं लगती यार. कभी खेल जाते हैं एक हाफ, अब ब्रेंटफोर्ड वाला अगर आप सेकंड हाफ देखो ना जाके मैच दोबारा, तो अगर वैसा खेलती है यूनाइटेड तो यू नॉट आर्ग्यू के भाई यहाँ पे यूनाइटेड ही जीत. 2-1 जीत जाएगी. 2-1 scrappy win, I would say. United 2-1 scrappy win. चलो, I will take a win, bro. मतलब कहीं ना कहीं हमेशा होता है जब टेन हाग पर गले पर ये लटकी होती है ना, तब that's when basically United have got a result and I am backing them, bro. Again, मतलब technically if we, like Chelsea obviously यहाँ पर focus कर रहा हूँ, because if we lose
Newcastle is never easy, and United win. Actually, Premier League it's not as bad as what it looks, and plus we are playing them, remember, as well very soon. लेकिन we are also playing Arsenal very soon, और Arsenal पर आ जाते हैं उनका गेम वीकेंड पर, Arsenal versus Liverpool, the big game of this weekend. Of course, again guys, जो भी लोग एल क्लासिको वेट करें, we'll be separately discussing that for sure. लेकिन Chintan has a soft corner for Arsenal. For people know, we have 3 Arsenal support. I think this is the first time on Almighty Blues जहां पर 3 Arsenal supporters on the panel. First of all, ये बोल देते हैं चिंतन, Arsenal का आपसे शुरू करते हैं, because I think Champions League watcher, what they have been doing in Premier League, dark arts etc. Obviously, you have seen a lot of dark arts teams for sure. पता नहीं, मतलब can we say that, because getting those 1-0 victories, the 1-0 to the Arsenal, you all remember, right? Course, the famous song, yes, the famous from late 90s and early 2000s. वो जो था ना, मतलब is it that? क्योंकि yes, there are loads of injuries, you have to give it. या Arteta is basically कहीं ना कहीं, not Ten Hag, compare तो नहीं करेंगे, he's done far better, in fact, he's a far better manager. लेकिन at this point in time, could you say कि he has been also lucky in recent times in terms of getting those results, because opposition are having chances? There's something missing in the last 1-2 महीना, नहीं 1 महीना especially. Yeah, बोल सकते हैं, but eventually I feel a lot of injuries. Yeah, when you have if you remove Odegaard and Saka from the team, you remove 2 big players from any lineup, and I think any team would struggle, especially Odegaard. But if win is a win, to be honest, मैं जो EPL fan base को generally देखता हूँ, I saw the City Arsenal game. The slack Arteta is getting is unreal. I don't understand the slack he's getting. So what? Eventually, I think every team plays for a win. So doesn't matter how you win, you play with what you have. जो players अपने पास है, you'll play as per your convenience. And against the City, जो match था, it was I felt it was an absolute brilliant Arsenal performance, to be very honest. क्या हुआ यार? They were almost unlucky, kind of John Stones kind of. It was, by the way, if you go to see, if you tactically break it down, it was near perfect for 60 minutes. वो लोग कुछ पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे. क्या फायदा वो बाहर से ऐसे इतने 200, 800, 10,000 passes किए? What is the point? Like, I don't understand this whole modern concept of, यार, they didn't play good football. So what? Like, not everyone is going to play one kind of football and win games. So I don't get the slack. He's I feel like I might be a little biased here also. To be honest, I'm a big Arteta fan, to be very honest. I think he's adapting very well. He understands that Arsenal जो, और यही same, you can just say यही same चीज public Wenger के लिए बोल रही थी, that he plays only attacking football. He does not adapt. If his team is 1-0, I still remember the very famous North London derby where they were 2-0 up. It turned out to be 2-2 because Arsene Wenger played Arsenal how they're supposed to play. So now that Arteta is doing it, I don't know the slack he's getting. Yeah, I think the Champions League was a little lucky, you can say that, but I feel the number of fixtures जो है, I think Arsenal, if they get out unscathed from this entire thing, will be amazing. Yeah, and probably sometimes सब भूल जाएंगे कि कैसे जीते थे. Bournemouth was, of course, just a bad game. Just generally, it was just I think with the workload on the players which are there, I feel it is. I think I feel he's doing a great job, and I think lucky तो नहीं बोल सकते. ऐसी कई टीम है यार जो, if you over the history तुम देखने जाओगे, were lucky to be there. City के लिए भी बोल सकते हैं यार, they were lucky against Wolves, I feel. So I think he's doing a great job, and I feel if they adapt and how they're adapting, of course, Arne Slot has come out of nowhere, but I really think this might be one of the seasons where they might get a little closer there to City. You think so? मतलब मैं तो अभी भी I'm sticking to my guns, और लिवरपूल पर भी बात करनी है. मतलब लाला knows that I've been kind of backing them. I don't know why, वो अलग बात है. When I was lucky enough to be live on TV also, मुझे question किया गया था चेल्सी का. I was talking about Liverpool, like I don't know why I mentioned, but you have to give them credit, Liverpool as well. Arsenal good team, हम अनमोलदीप बोल रहे हैं, even title contender, but Man City से points drop हो जाते तो ultimately title lost हो जाता है. अच्छा बोल रहे win is a win, but Arsenal is far superior team that than they have played in the last matches. Arteta has
to bring the team back, and this style of play has an expiry, not sustainable to win any trophy, in my opinion. मतलब again, one can argue. Let's actually break it up, क्योंकि Arsenal Liverpool tactically, I don't know, थोड़ा बहुत I'll go back to history as well. I don't know, Suchit, being an Arsenal fan, do you have a personal favorite Arsenal Liverpool game? मैं last weekend बोला था Chelsea Liverpool is an underrated rivalry. Actually, Arsenal Liverpool, some good games have happened over the years. I don't know if you all remember. For all, मुझे तो personal favorite Yeah. था, although an Arsenal player, Definitely. Arshavin, that has to be wow. What a game! For all, definitely. But if you talk about like recent times, in the 2018-19 season where Arsenal were absolutely like nowhere near Liverpool standards, and somehow in the dying minutes, Lacazette falls on the ground, twists, turns, and then scores an equalizer against Liverpool at Emirates. I think that was like one of my favorite moments. But if we again go to lockdown, where we somehow beat Liverpool, where Reece Nelson scored, and it was such a bizarre win. Like, because in that run we beat Liverpool, we beat City, and then we beat even Chelsea to win the. I mean, not in the exact run, but like we beat Liverpool in the Premier League, then we beat City in the FA Cup, and then we beat you guys as well. So that was an amazing run for me. Like, so yeah, these moments I really remember as like forever the things. बिल्कुल that's a good call for sure. लेकिन let's talk about a little bit Liverpool. लाला भाई, क्या यार, Arne Slot doing Pep Guardiola things in the press conference, मतलब bigging up the other opposition managers and वो all that, मतलब मरेस्का और चेल्सी पर भी आएंगे, लेकिन मतलब ये बंदा, I don't know, मतलब I've seen a lot of Dutch managers, being a Dutch supporter as well, a lot of them. This guy is a different kettle of fish. वो पता नहीं क्या, अगेन हम बोल रहे थे टेना क्या कहता है, बंदा मतलब एक अजीब सा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब कामनेस है, मतलब विल दैट बी राइट टू से, एंड दैट प्रोबब्ली इज हेल्पिंग द प्लेयर्स, द प्लेयर लाइक ग्रावेनबर्ग को इसको कर दिया है. लेकिन जो हम बात करते हैं आर्सेनल का मिडवीक में, व्हाट अबाउट योर मिडवीक, मतलब आपको लगा कि रोटेशन नहीं हुआ वापस ज्यादा, वापस से वाज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न क्योंकि बिजी पीरियड है, या यू आर लाइक गुड, जस्ट 3 चेंजेस थे टू स्टार्टिंग 11? हाँ, I was a bit concerned कि he said that McAllister was fit, तो no chance like McAllister नहीं खेलेगा, and that makes sense as well. But मैं चाहता था कि जिस हिसाब से कर्टिस का गेम गया था चेल्सी के अगेंस्ट, मैं चाहता था कि कर्टिस को चांस मिले एंड वो खेले, उसको वो कंसिस्टेंसी मिले. इवेंचुअली उसको वो चांस नहीं मिला, एंड इट्स फाइन. बट मिड वीक जो भी मैच था, स्टार्टिंग के 15 मिनट वाज नॉट दैट कन्विंसिंग, क्योंकि काफी हाई प्रेस कर रही थी लाइप्जिग की टीम. तेज भागने वाले लौंडे हैं उनके पास, मतलब इट वाज टफ फॉर लाइक फर्स्ट 15-20 मिनट्स. बट उसके बाद क्लियरली दिख रहा था एक मैच में, मतलब आई ऑब्जर्व, मैंने कभी क्लॉप के टेन्योर में नहीं देखा होगा कि 4-2-4, 3-5-2, मतलब डिफरेंट फॉर्मेशंस एक ही मैच में 3 फॉर्मेशंस देखने को मिल रही हैं. ऐसी अडैप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन मैंने कभी क्लॉप के टेन्योर में नहीं देखी होगी. तो आई लव्ड इट, वो वाला सिचुएशन. बट अदर देन दैट, हाँ यार, ये बंदा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, बट इसके जब भी ये बात करता है फील्स लाइक ही हैज दैट सेंस ऑफ कामनेस, एंड उसको पता है, लेवल हेडेड इंसान लगता है कि उसको पता है मेरे को इतना बोलना है, बड़ा नाप तोल के बोल रहा है, इतना बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, और बीच में एक आधा जोक भी क्रैक करना है कि मीडिया मेरे साइड पे रहे. तो मतलब काफी आई वुड से क्लेवर है काफी इस मामले में. मतलब कहीं ना कहीं इट्स ही इज काइंड ऑफ रेजोनेटिंग जो लिवरपूल फैंस इन जनरल, मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकता, जितना मैं बात करता हूँ उनके लिए बोल सकता हूँ, जो लिवरपूल फैंस ट्राइंग टू प्ले इट सेफ येट अगेन, कि भाई हम नहीं है, वी आर लेट्स सी, वी नॉट बीन टेस्टेड एटसेट्रा, जो चल रहा था लास्ट वीकेंड तक बिफोर द चेल्सी गेम. He is almost doing the same thing in my opinion, which is kind of working in a good way, I believe, for Liverpool players. But again, the table doesn't lie at all. आप देखो, especially the goals conceded, मतलब for me that kind of stands out like anything. Just 3 goals conceded, guys. आज के दिन में, आज के युग में it's very difficult, especially talking about a Liverpool team doing that. अगर आप देखो तो fixtures भी, yes, you can argue that they had fairly easier fixtures compared to few other top teams शुरुआत में, लेकिन now that they have played Chelsea, and अगर इस weekend में they get a result against Arsenal,
all of a sudden you never know. मतलब you are looking at least Premier League में focus करो तो you are looking at a couple of winnable games for sure. तो it's looking scary for sure 100%. लेकिन before we go to others, I would stick to Lala for one more question quickly. Chat आप लोग भी बोलिए. Luis Diaz, Lala knows that I am a personal fan, but so am I of Gakpo. If for this game in particular अगर आपको चुनना है, considering 2 games में शुरू नहीं किया है Diaz और Gakpo has actually performed really well, अब clearly Gakpo has overtaken Diaz. Is that a thing? No. I remember हमारी season start पे conversation में I was like कि नहीं अगर we get a good offer let's just sell him. But मैंने एक चीज देखी है लुइस डियाज अंडर आर्ने स्लॉट one-on-one situations में he has improved भाई, बहुत गजब improvement दिखाई है उसने. इस decision making काफी बढ़िया हो गई है. तो अगेन आई वुड से लुइस डियाज को खिलाओ, सलीबा नहीं है, मतलब वो आतंक मचा सकता है वो वाले एरिया में, मतलब नेक्स्ट लेवल. क्योंकि जो पेस एंड जो मतलब वो कहते हैं ना कि सडन बर्स्ट ऑफ पेस लाना, वो लुइस डियाज के पास है, गैक्पो के पास वो नहीं है. गैक्पो इज मोर ऑफ अ कट इनसाइड काइंड ऑफ अ क्रिएटिव काइंड ऑफ. He is more like a forward who plays wide at times, almost. तो ऐसा मैं लगता लुइस है. डियाज को ही प्रेफर करूंगा खिलाना. एंड जो आपने बोला ना कि खाली 3 गोल कंसीड किए हैं, मैंने हमेशा निधि भाई के चैनल पे, मैंने सिंधा मॉन्ग पे, हर जगह अपने पे भी यही बोला है कि चेल्सी के मैच में ना इन लास्ट 15 मिनट्स जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर था वो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, बट डिफेंसिव स्ट्रक्चर वाज ऑनेस्टली द बेस्ट. मतलब मेरे को वो देख के ऐसा बोला वाह यार, मतलब कितना अच्छा डिफेंड कर रहे हैं मतलब आप. कितना लिवरपूल, आई डोंट नो इफ पीपल अग्री, लेकिन आई थिंक लिवरपूल जो मीडिया हाउस में रहते हैं ना लोग, अगेन दे हैव बीन स्पॉइल्ड, क्योंकि यस्टर इयर्स अगेन अर्ली 90s 80s 70s एटसेट्रा दे वर लाइक नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेलते थे. आई बिलीव सो. अगेन वी हैव नॉट वॉच्ड दैट, लेकिन they were not very proud of that performance. I think you have to be, क्योंकि कहीं ना कहीं वो title winning kind of mentality थी कि यार we are happy to sit back and hit. I'm pretty sure यहाँ चिंतन you will probably back me यहाँ पर in terms of how you have to be strategic in certain games. और I think Liverpool अभी prove कर रही है, and Arsenal वो कैसे tackle करेगी, because Arsenal is supposed to be that team this season. तो it'll be interesting कैसे होगा ये game, नहीं? Yeah, it's a very interesting. I'm very, very happy to see how Arne Slot is doing his जो people were expecting that gegen press जो Klopp ला रहा था, this guy's got a certain calmness. You don't see Liverpool just running helter skelter now. मतलब वो दिख रहा है उनका एक adaptive approach है, and Gravenberch को जो उसने convert किया है यार as outstanding. You know, that's properly on the coach, and this is what I think Ten Hag is lacking. एक उसे मोल्ड किया है. ग्रेवेनबैक has never played that position, to be very honest. उसको कन्वर्ट किया है. He likes a pivot role. उसके फायरवुड में भी जो था, उसको 2-3 सीजन उसने उधर निकाले थे. He likes someone who can play that pivot role, who can beat the press, push the ball outside. It's absolutely amazing how well he, and यार जो उसके सामने वही खेलेंगे. And I understand why Liverpool fans are also very they're not also running gung ho कि नहीं यार, because Arsenal और City के पास थोड़ा momentum है. He's a new manager. He's not gone through a rough patch as a manager yet, so वो कैसे adapt करेगा? So I understand, but this is definitely a very, very good sign how they're playing, how they're adapting. Chelsea Liverpool was very entertaining the game. So and again this is going to be against Arteta, जो Arteta कर रहा है. So let's see how it goes. This is going to be like a battle of chess जैसा होगा यार. And Saliba is going to be a huge miss, and Calafiori also got injured and walked off. So it's going to be a very, very shaky Arsenal defense. Let's talk about the Arsenal players now, because the big question is, of course, how will you approach this game? I don't know, मतलब Parth, if you have to go first in terms of कैसे expect कर रहे हो at home, and it is a 6-pointer, guys. आप 3 points, मतलब you have to go for 3 points क्योंकि already you have dropped points. What are you saying कि आप kind of go attacking? क्योंकि last weekend, weren't you surprised, Parth, that उसने खेला basically Mikel Merino as well as basically you had Rice and Partey, if I'm not wrong, which was very surprising, Yeah, right? that was a very poor 11 that we put out. Matlab, if it was against a good, solid opponent, I mean, no disrespect to Bournemouth, but still, we can play attacking players in the 11, and especially with Vaneri, who has been showing signs of being a good player. Matlab, he was the only creative player we had when we missed Odegaard, and he didn't even get a minute, and he got some minutes matlab, later in the game when the game was done. So I think yeah, Arteta has been very pragmatic with the way he's approached these games. जहाँ पे
he should have been someone जिसको risk लेना चाहिए था ऐसे games में because they are winnable fixtures. But then again, be the way Arteta has been this season, I expect more of a defensive structure than an offensive one, even if it is against Liverpool at home. मतलब मेरा तो वैसे ही रहेगा because at this moment in time with all the injury scares, consolidating and not conceding is more important than going all out and trying to win the game. वो बहुत it will be difficult and that too against Pool. Suchit, what's your 11? My 11 would I'd definitely start Veneri. It'll be like a back four. See, I'm Wow. not really sure what the situation is with Timber. To be very honest, if Timber was available, I would have been a lot more cooler, a lot more मतलब it calm. was a muscle injury, right? If I'm not wrong, the Yeah, muscle injury, I yeah. think it's far too He's risky. available. Huh. I think he's available for the week. No, I But don't I'll be think really Timber is surprised if he available starts. So because muscle injuries, if you no, really because he's been pulled out even from the Netherlands squad as well. correct, It is going to correct. yeah. So that's why I'm not really sure what exactly is the situation. So if we were supposed to see the back line, it'll be like Magalhaes and Ben White with the right back. Probably it should be who will be the right back? Zinchenko. Partey could play there. Partey could be Yeah. the right And back, and imagine Partey against Diaz / Gattuso, bro. That'll be an interesting battle. I think that'll be fine. I think it'll be fine. I'm not saying it'll be horrible. I think it'll be fine. As a left back, I think I would still start Kivior over Miles Kelly because it's against Salah. It's not against like some random random right winger that Liverpool are playing. So I'd Of start course. Kivior, and in midfield I'd start Declan Rice, Veneri, and Marino, and forward line Martinelli, Havertz, and Trossard. Saka. And actually Trossard on the left and Martinelli on the right. Oh, that's interesting. Why would you change Martinelli? Yeah. But interesting. पता नहीं कोर आप अगर Hmm. न्यूट्रल बोलोगे मतलब आर्सेनल लिवरपूल कैसे अप्रोच करना चाहिए दोनों टीम्स को एंड मतलब ऑब्वियसली लिवरपूल आर फेवरेट्स डू यू एग्री विद दैट एंड मतलब putting in a youngster in as a starter in this game मतलब do you think is the right approach or इस game में probably he should play the midfield that he played in last game? Yeah. मेरा ख्याल है बहुत एंटरटेनिंग मैच होने वाला है. नो बीइंग अ न्यूट्रल हियर, सीइंग आर्सेनल लिवरपूल नो आपको पता है राइवल्स और वो सब चल रहा है. टॉप ऑफ द टेबल, सीइंग देम टॉप ऑफ द टेबल ऑफ कोर्स हर्ट्स ऑफ कोर्स, बट या आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ 6 पॉइंटर जो भी यहाँ पे लेता है. बट आर्सेनल का वो ये इंजरी इश्यूज हैं. डिफेंसिव लाइन आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता राइट बैक कौन होगा, सेंटर बैक कौन होगा. दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. आई थिंक फॉर इवन फॉर आर्सेनल फैन दे डोंट नो के who would be that right back now. So I think Timber is very key क्योंकि Timber can kind of play in both the full back positions. I think that's very key. Timber अगर फिट होता है तो फिर मैनेज हो सकता है. भाई मैच वाली फीलिंग हो रही है आदित्य ना फैंस को नहीं अकबर, क्योंकि आपका भी याद है लूक शॉ आउट था, फिर मलाशिया आउट था, फिर आपने लोन पर लाया था जिसको मतलब रेगुलर तीनों आउट थे. आई थिंक इट्स दैट हमने उसके लास्ट बाद सीजन अमराबाद खेला, लिंडलॉफ खेला, करेक्ट पता नहीं किसको लेफ्ट फिर फाइनली डालो और वो डालो अभी तक अटका हुआ है. इमेजिन करिए मतलब इट्स सच अ केस. और ये चीज ना मजाक में कर रहे हैं, लेके आए वो नंबर 10 खेल रहा है. मतलब जिसको लेफ्ट बैक खेलना चाहिए वो नंबर 10 खेल रहा है. मतलब यार हद हो चुकी है. मैं लेकिन वही बोल रहा हूँ क्योंकि आर्सेनल की बात हो रही है ना यहाँ पर. इन माय ओपिनियन एंड आई हैव बीन सेइंग इट फॉर लॉन्ग, आई थिंक पीपल जो चैट में माइट हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, ये पक गए होंगे, लेकिन Arsenal I thought last season were a little bit lucky in terms of injuries apart from Timber, you know, that वो I don't think many people can argue. जो टचवुड अभी हम लोग का चल रहा है, you know, अब इनको एहसास हो रहा है जो हमारे साथ लास्ट सीजन. हाँ exactly. So many injuries. United also face so many injuries. अब मुझे ये नहीं पता कि साका और ओडिगार्ड की क्या सिचुएशन है. If both of them are going to miss the game, then they are going to be a big wins against Liverpool. Yeah, they are confirmed out. I think they are confirmed out. Odegaard is so confirmed out. Odegaard to definitely confirmed out 100%. In the by Vivek having fun with it. Odegaard की रिप्लेसमेंट नहीं है. Odegaard की रिप्लेसमेंट फिलहाल आर्सेनल के पास नहीं है. मेरा नहीं ख्याल कि वो जो क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है ना वो आर्सेनल की टीम में और कोई कर सकता है इस वक्त. I still believe कि Trossard had one bad game in Europe वाला सीन था midweek में. But he's good on the left. He's good on the left. He's a brilliant finisher. Martinelli was really good by the way. Martinelli looks like, I think मैं सुचित का ट्वीट भी देख रहा था ना, agree with him. I thought it was like Martinelli वापस आ गया वाला सीन था. तो I don't think if I'm Arsenal, which I'm not, I have to say definitely. You are Arsenal?
Martinelli को left से I don't think you should move. मेरा two cents is agreed, you should agreed, keep Martinelli agreed. now that he's got his thing. And Hmm. also the fact is क्योंकि Liverpool है, I know Trent defended really well against Sancho, but that's Sancho. And I'm pretty sure Klopp सैंचो will का आपको back पता that. लग गया होगा, सैंचो का आपको पता लग गया होगा। भाई मैंने तो ऑलरेडी बोला था कि हमारे पास ना विंगर स्टार्टर्स वाले नहीं है, ज्यादा ऑफ द बेंच वाले हैं। दैट्स द रियली फैक्ट। सुरेंद्र क्या हाल है, व्हाट्सअप? लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक मैंने सबको आयुष का नहीं लिया है। लाला व्हाट डू आदित्य यू का थिंक? जो ऑफ कमेंट कोर्स है ना, आदित्य का कमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल है स्लॉट्स गेम मैनेजिंग एबिलिटी इज अ थिंग दैट गोज अनअप्रिशिएटेड। ये मैं yes. एब्सोल्युटली एग्री करूंगा। और मेरा ख्याल है कि जब मतलब लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड वाला जो मैच था उसमें हिज गेम मैनेजमेंट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, स्पॉट ऑन। जिस तरह से उसने पूरा गेम मैनेज किया है, ही डिडंट गिव अस मतलब कोई चांस ही नहीं था यूनाइटेड के पास उस मैच में। तो दैट इज व्हाट थिंग दैट टेन हैग नीड्स टू नो लर्न। और ये बहुत अफसोस होता है कहते हुए कि भाई 2 साल टेन हैग को प्रीमियर लीग में हो गए हैं और स्लॉट जो है वो बाद में आके उससे अच्छी मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे टेन हैग। नहीं, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आई थिंक ये जो चीज है ना प्रोसेस वाला, ये घंटा प्रोसेस होता है सीरियसली। ये अब हो गया प्रोसेस, 2 साल हो गए। एग्जैक्टली, वी हैव सीन इट ना। ऐसे रिसेंट इयर्स में हमने देखा जब क्लॉप और ग्वार्डियोला थे, कॉन्टे आकर ले लिया प्रीमियर लीग, जब इतने सारे मैनेजर्स थे, द ग्रेट्स ऑफ द ग्रेट्स इन द चैंपियंस लीग, यहाँ पर टुकल आकर ले लिया। अभी देख रहे हो आप व्हाट स्लॉट इज डूइंग इन लिवरपूल। भाई ये एंज वाला सीन नहीं है। अभी इतने सारे गेम्स हो गए। एंज जो था लास्ट सीजन, दैट वाज डिफरेंट। स्लॉट आप देखो ना, जैसे चेल्सी गेम में दिखा था लाला, दैट ही एक्चुअली हैड अ प्लान बी एंड दैट इज गुड टू सी। लेकिन इस गेम में बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग डार्क आर्ट्स, तो यूजेज होगा 100% आर्सेनल का, क्योंकि दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ इंजरीज। तो दैट विल बी वन टैक्टिक डिस्पाइट बीइंग एट होम। मिडफील्ड प्लेयर्स करेंगे, मैं लिख के देता हूं, वो भी मैकलिस्टर के ऊपर होगा जो होगा। डेक्लन राइस और मैकलिस्टर का भाई वर्ल्ड वॉर 3। दिस इज द रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा वरीड हूं कि केलियर गोलकीपर है, क्योंकि केलियर इज अमेजिंग, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो एलिसन का बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कमांड वो अपना गोल करता है ना, वो केलियर भी उतना नहीं कर पाएगा। एंड जो वो कॉर्नर्स पे वो मतलब करते हैं, वो आई ऑनेस्टली डोंट लाइक इट। एंड ऑब्वियसली वो विद इन द रूल्स है जो वो करते हैं। आई ऑनेस्टली डोंट लाइक इट। I think with Alisson at the back, your back four is more comfortable as well. अब अगर वो कैलियर होगा या बैक फोर, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा मसले मसाइल होंगे आपको। थोड़ा सा तो मसला होगा। बट अभी आई फील इतना कैलियर भी खेल लिया है, लास्ट सीजन भी इतना खेला है फर्स्ट टीम में, कि बैकलाइन इज वे मोर कंफर्टेबल। बट अगेन जो मैं हर एक मैच में एक चीज बोलता हूँ कि जैसे चेल्सी के मैच में द वन थिंग आई लव्ड अबाउट स्लॉट वाज कि उसको गेम स्लो करनी थी। अंकित भाई होता होगा, लास्ट के 15-20 मिनट उसने गेम लिटरली स्लो कर दी जब उसने सब्स्टिट्यूट्स करे, प्लेयर लाए। बिल्कुल, दैट्स पार्ट ऑफ गेम मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली। तो पता था कि अब इससे ज्यादा गोल नहीं आ पाएगा, ज्यादा वो करने का, उसने गेम लिटरली स्लो कर डाली। एंड स्टार्टिंग के 15 मिनट में भी व्हेन चेल्सी वाज लिटरली डोमिनेटिंग द मिडफील्ड विद दैट 4 बॉक्स, जहां पे पामर भी ड्रॉप कर रहा था, तो उसने गेम में उसको इशारा किया जोटा को कि यू हैव टू ड्रॉप डाउन, नंबर्स इंक्रीज करो मिडफील्ड में बॉल लेने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हम कभी कभी उतना ध्यान देते नहीं है, एंड आई फील लाइक यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड आर्सेनल के मैच में आई वांट कि सबसे इंपॉर्टेंट गेम है मेरे हिसाब से ग्रावेनबर्ग के लिए। अगर उसका गेम अच्छा जाता है ना, तो आई फील हमारी पूरी टीम अच्छा कर जाती है। उसका गेम अच्छा जाना चाहिए, दैट इज द मेन प्लेयर। एंड मैकलिस्टर उसके साथ होगा, तो आई फील लाइक I'll be more confident कि गेम उसका अच्छा। Either of Partey or Rice probably will have a job to do वहां पर, that is quite clear। लेकिन वही है, क्योंकि ब्रेक ऑफ प्ले करने का मैकलिस्टर हैज अ वेरी गुड नैक, वो भी एक चीज है। तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग बैटल 100%। लेकिन has been amazing this season, amazing। उसका ओल्ड ट्रैफर्ड वाला गेम, आई थिंक इट वाज one of the best this season। Gravenberch was amazing in that game as well। And midweek में न्यूनेस को भी Gravenberch arguably has been Premier League's best midfielder this season. According to the numbers, only according to the numbers। हाँ यार लाल, एक सेकंड भाई, सब लोग भाई, when will you accept and admit that you are having on form the best midfielder in the Premier League and you are Premier League title, you know, almost favorites? Come on लाला भाई, contenders नहीं, मैं तो बोलता हूँ at this point in time कंटेंडर तो नहीं, लेकिन लास्ट सीजन भी सीजन स्टार्ट पे सबने कंटेंडर है। मैं तो बोलता हूँ 100%। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना,
अब देखो, you have not been tested, you have had 3 games in the last 6 games जहां पर आप बोल सकते हो you needed a plan B, plan C, और वो दोनों में I think you have kind of come up trumps, और in fact it's looking like आप third gear में ही basically जीत रहे हो such kind of games. So that is exactly what a title contender basically का definition in my opinion. भाई it's high time bro. लाला 3-4 हफ्ते 1 महीना पहले अलग चीज था, अभी अलग है ये तो I will not say when, but anyway it's your call after all. That could be it for all we know. So let's go with the prediction, guys. By 55 minutes into stream, I hope there are 155 likes. Lekin all the people are watching, everyone is subscribed to the panel as well. Links below. Calcio Charcha hai, Kick It with Lala hai, Football Showdown has, of course, kickoff conversation hai. Right? Do not forget that for sure. Lekin let's go around the table for a quick prediction. Arsenal versus Liverpool. Let's predict the goal scorers as well. Let's see. What are you saying, Chintan? Very difficult. I'm going with 1-1. I think it'll be a 1-1 draw. Arsenal will want to not concede. And what you said was absolutely right. I think they should stick to the same midfield they stuck last season. Last game, sorry. So I feel their first job is going to be not to concede. And I think they will stick to the last game. I don't know why he could have risked Jorginho. He should have played him actually. Team defensive midfields, Bournemouth didn't sound good, didn't look good. They have a good record there. So I'm going with a Kai Havertz goal and a Mohamed Salah goal. So I think it'll be a 1-1 and Arsenal should भाई Kai Havertz को डालना ही था गोल में. Oh yeah, he's gotten the best out of Kai Havertz. You can see the best version of Kai Havertz after Leverkusen show. So I'm guessing 1-1 होगा शायद ये. But I like it when he plays Trossard behind as number 8. जब वो पीछे खेलता है, he's very effective. So I won't be surprised if he pushes Sterling up, Trossard behind. So one bad game, and I'm very surprised. यार ये आर्सेनल के साथ ही ऐसा होता है. One bad game and people just slander them like. Trossard you should back 100%. He's a good player. Yeah, Trossard is clutch. I feel he's scored such important goals over 2 seasons, and amazing. I feel it turned out to be a blessing जो Mudryk नहीं आया and Trossard को buy किया. As of now, ऐसा लग तो रहा है. So, चलो उस पर चल जाते हैं. भाई सब लोग चैट में आपका कमेंट प्रेडिक्शन दीजिए क्विकली बिफोर यू गो टू द Mudryk एंड चेल्सी, बिकॉज वहां पर एक अलग नैरेटिव है व्हिच आई थिंक कहीं ना कहीं आई हैव टू काइंड ऑफ रेज द फ्लैग एंड चेंज दैट एंड दैट्स अ फैक्ट. लेकिन पता नहीं, लेट्स आस्क किक ऑफ कन्वर्सेशन गाइस. व्हाट आर यू सेइंग? लिवरपूल अवे टू आर्सेनल, कौन जीत रहा है और क्या स्कोर लाइन है? Tough to predict. I think 2-2. I'll go with 2-2. I think it will be a good game and 2-2. आर्सेनल का ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है डिफेंसिवली स्ट्रगल करेगी आर्सेनल जितना भी कर लें, बिकॉज लिवरपूल अटैकिंग वाइज दे हैव बीन ब्रिलियंट दिस सीजन, स्कोरिंग गोल्स, और डिफेंसिवली अगर देखें तो लिवरपूल हैव बीन गुड, बट अवे मैच आर्सेनल एट होम, तो मेरा ख्याल है वो एक चीज है कि आर्सेनल स्कोर कर सकती है. So I guess this would be a draw, maybe 1-1, 2-1. इनमें से मेरा ख्याल है ड्रॉ. मतलब ऑब्वियसली हम जैसे गरीब इंसान तो ड्रॉ ही होप कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशली भाई 3 मैच पता है कितने मैच हो गए ड्रॉ करते करते, क्योंकि चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में भी बाकी है. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉल, एब्सोल्युटली. लेकिन मैं न्यूट्रल्स का ले लियो भाई क्विकली. लेट्स मूव ऑन एंड वो एक टॉपिक में मुझे छेड़ना है फॉर ऑल द पीपल. भाई यस, एक गेम ये कॉन्फ्रेंस लीग ही था, पनाथिनाइकोस ही था, आई गेट दैट टोटली. लेकिन पीपल से भाई पनाथिनाइकोस था, कॉन्फ्रेंस लीग था, इसमें क्या ही तो हाइप करना. कम ऑन, यू शुड हैव एनीवे वन दैट गेम एंड belted Panathinaikos. But Greece का atmosphere, people who actually watched the entire match would know, and Mudryk performance was not a one-off. People have watched the cup games, बाकी matches में भी और जितना भी किया है, I think he's come off the bench and actually looked far better than what he was whole of last season, और even last season. यहाँ पर yes, मैं एक जैसे so called Kai Havertz को सपोर्ट करता था इनिशियली, यहाँ पर मुड्रिक को भी कर रहा था लास्ट सीजन. Why? Because you see there are moments जहाँ पर he does extreme things. He does things like wow, and he does things like oh man, horrible. Well, that is the thing about Mudryk. So he is still very very raw. So people need to understand. But what a brilliant performance from him, I must say. मतलब I think he's got 2 assists and 1 goal. Of course, Joao Felix etc. लेकिन Newcastle will not be easy. न्यूकासल विल नॉट बी इजी. न्यूकासल में अब ये चीज है, मुड्रिक का क्यों मैं टॉपिक छेड़ रहा हूँ, क्योंकि यू ऑल रिमेंबर लास्ट सीजन में वी वर एक्चुअली देयर. लाला विल हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस बिकॉज ऑफ वी प्लेड लिवरपूल इन द फाइनल ऑफ द कैराबाओ कप, राइट. लेकिन वहां पर हम पहुंचे कहीं ना कहीं मुड्रिक के लास्ट मिनट गोल से अगेंस्ट न्यूकासल. सो ही हैज सम मेमोरीज जो लिवरपूल के गेम में भी था, क्योंकि ही हैड अ डेब्यू विद लिवरपूल, बट आर्ने स्लॉट भी अटके हुए, मरेस्का डिड नॉट यूज हिम.
तो आई थिंक दिस टाइम वन कैन आर्ग्यू, क्योंकि सैंचो का जो परफॉर्मेंस आया था लास्ट वीकेंड अगर लिवरपूल, आई थॉट इट वाज far too predictable if I have to say. Sancho was kind of always cutting in, एक ही चीज कर रहा था, और Trent probably did very well against him as well. लेकिन bit of both, शायद maybe I know it's one game, जैसे पैनल बोल रही थी that इतना जजमेंटल होना ठीक नहीं, लेकिन I think चेल्सी के पास इतना सारा टैलेंट ऑन द बेंच that I think we have to go for 6 pointers. हमें big call करना लेना पड़ेगा अभी, and I think Neto and Mudryk probably at this point in time, I would like to say again, Chad आप बोलिए, but Neto and Mudryk as wingers are probably better off in form versus a Sancho and Madueke अगर मैं बोलूँ तो. I think that is a no-brainer. But I don't know, मतलब Newcastle tight, मतलब press होता है, आपको पता है, there will be tight spaces and all that. If I have to ask the panel, I don't know, Lala, if you have to go with this, मतलब do you think Chelsea not starting Nkunku is still a big mystery, or people already saying कि Nkunku might leave, जो मुड्रिक का भी बोल रहे थे क्योंकि वो स्क्वाड में नहीं था. If you remember, याद होगा आपको लास्ट जो स्ट्रीम थी इसमें मैं बोला था कि why not Nkunku and why Jackson हुई, हमारी बात हुई थी. Even though Jackson is doing good, लिवरपूल के अगेंस्ट बहुत प्यारा खेला था मेरे हिसाब से, लाइक जैक्सन, काइसेडो एंड कोनाटे को याद आ गया था भाई, बहुत सारी चीजें. Noni Madueke was brilliant as well, I would say. Again, I thought Robertson was quite poor in that game, but ठीक है, Noni Madueke को तो प्रेज करना पड़ेगा इसके. नहीं, Robertson, I would say no, Robertson सबसे ज्यादा लैक एक ही चीज में कर रहा था, पेस. लाइक अब उसकी वो पेस नहीं रही जो उसकी वो होती थी, even though he's not that old, but क्लॉप ने उसको इतना भगाया है कि अब वो बेचारा बोलता है कि अब मेरे से ज्यादा भागा नहीं जाएगा. बट टैकलिंग एंड एवरीथिंग he was okay in that, but पेस में नोनी मैडवेके ने उसको खा गया था, लिटरली खा गया था. बट आई वुड से पता नहीं, मेरे हिसाब से एनकुंकू एंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोगों को पता नहीं कभी अच्छा नहीं लगता है. जाओ फेलिक्स इज समवन आई ऑनेस्टली बिलीव इन हिम अ लॉट. आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक वो एक अच्छा फॉल्स नाइन काइंड ऑफ रोल प्ले कर सकता है मेरे हिसाब से. Okay. तो are you trying to say कि कहीं ना कहीं मतलब we play Nkunku, and you have a point actually. आप देखो जब भी Nkunku और फेलिक्स although कप गेम्स में खेले इस सीजन together, I think उनका एक जुगलबंदी बोल सकते हैं, ट्यूनिंग, एक केमिस्ट्री है, because both are touch players kind of, if you know what I mean. और वो एक kind of one for the other वाला मामला रहता है clearly. But on the other hand, if you play both of them, you are saying that Jackson almost can come off the left hand side, जो anyway drift करता है. And because Sancho is not showing that 90 minutes wala player wala vibe yet, although he's been far better than what he was at Manchester United, I must put it there. On the other hand, आप Madueke slash Neto है, तो I think you have a point, but again Palmer, Nkunku and Felix को आप फिट नहीं कर सकते हो. No, that's the point. हाँ, you could go this way, that you could play basically an extra attacker and kind of have 4-1-4-1 system. लेकिन Enzo Maresca आपको पता ही है, मतलब like a Pep, I don't see him kind of changing on his philosophy of football. और वो 3-4-1 ही खेलेगा. हाँ, चेल्सी मैच जीत जाएगी. अरे बोलने की बात है भाई, मतलब for all you think might change. Why change something which is not spoiled? So I don't think. एक सेकेंड चिंतन, हमने लॉस का सामना किया लास्ट प्रीमियर लीग गेम. But that was a very close game. I don't think what you had last season. First of all, Lavia and Caicedo pairing is amazing. मैं agree कर रहा हूँ. कुछ इतना बिगड़ा नहीं है कि इतना change करने की जरूरत. I only think what you said, I agree. I think Neto should start. I think he's amazing. Neto should start. Neto is doing amazing. I'm not a big Madueke fan as of now, but I think I think Neto and Nkunku, I'm a huge fan. Nkunku would be one of my first. I know Jackson खेलता है, अच्छा खेलता है, but Nkunku has to start, at least try तो करना चाहिए. But last again Liverpool, you were toe to toe, so it's nothing. I think you can probably say Chelsea is quite back, and I know Newcastle on paper seem very good, but they are not. They're low on confidence, so should be what? Yes, Newcastle hasn't been all that this season. The Brighton controlled quite a bit, though Brighton did bench a lot of players. So I don't think, but what you're saying is right but I think it's working very well for Chelsea right now. Possession अच्छा कर रहे हैं, Lavia, Caicedo दोनों बॉल अच्छा बाहर निकाल रहे हैं. So I don't think you should change much.
But वन again, मोर थिंग इज के जो न्यूकासल है वो भी डिफेंसिवली उतनी साउंड इस सीजन हमें नजर नहीं आई. दे आर कंसीडिंग वेरी चीप गोल्स एज वेल. तो आपको चेल्सी को आई थिंक विद दिस अटैक दे शुड डेफिनेटली विन दिस वन. मेरा ख्याल है कि और कोई रिजल्ट होना नहीं चाहिए. चेल्सी होम पे है. पाल्मर इज इन वेरी गुड टच. उसके बाद अगर आप नेटो को खिलाते हो, आई थिंक नेटो शुड स्टार्ट दिस मैच डेफिनेटली. आई थिंक उसके बाद आपका मिडफील्ड में अच्छा काइसेडो और जो है उसका लाविया, यस, वो दोनों. yeah, this is the next topic of discussion क्योंकि I thought Enzo Fernandez again just Conference League Panathinaikos had a very good game और मुझे लगता है that horses for courses is what it should be. मेरा 2 cents is like I think there are games like Liverpool game. Lavia had a sensational game for 50 minutes, right? लेकिन वो फिटनेस का इश्यू है तो just like Reece James we cannot play him for full game. लेकिन on the other hand there are games जहां पर like Newcastle, I know they'll be pressing, लेकिन there'll be tight spaces जो we have to make sure कि हम advantage ले. तो अगर आपके टीम में फेलिक्स या इंकुंकू भी नहीं है, पामर आर these days blocked. So in that case मुझे लगता है एंजो फर्नांडिस को हम मिस किए despite Lavia doing very well in that game. तो I think so called big six या say top 7-8 teams के against, I still believe that there are games like Newcastle especially जहां पर Enzo Fernandez might be probably a no-brainer कि he should start. लेकिन people saying that Enzo Fernandez and Caicedo से ज़्यादा Caicedo and Lavia kind of suits better because they kind of do defensive work a little bit more compared to Enzo और वहां पर बाकी attackers have it in them. I don't know. Parth, if you have to pick for Chelsea, do you think it's a little bit harsh on Enzo considering that Lavia has hardly played भाई अभी इतना जल्दी क्यों जज कर रहे हैं? मतलब लास्ट सीजन एंजो wasn't that good तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि एंजो is an लेकिन लास्ट सीजन he was playing with hernia ना hernia surgery किया था वो समर था में. agreed but again हम लोग उसको ऐसा basis नहीं बना सकते ना मतलब if Lavia is the one who stepped up against a game of whose magnitude and the way we saw both of them play Caicedo and Lavia वो and it was not all that defensive मतलब उनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि they are just CDM वाले CDM they know how to pass the ball they are press versus sprint and they actually showed good signs. Matlab, Enzo will have to fight his way back into this team. He does not walk past straight. मतलब अगेन वी कैन अग्री टू डिसएग्री फेयर. मुझे तो अभी भी लगता है मतलब रीस जेम्स के लिए भाई बहुत लोग बोल रहे थे इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर चेल्सी टू कैश इन एटसेट्रा लेकिन अभी ऐसे भी ज्यादा कोई पे नहीं करेगा और आई थिंक रीस जेम्स ऐसा बंदा है नो रीस जेम्स एंजो को मैं सेम ब्रैकेट में क्यों डाल रहा हूँ इवन लाविया फॉर दैट मैटर. मुझे लगता है द क्वालिटी एंड द पोटेंशियल इज वेरी मच देयर. मतलब ऐसे प्लेयर्स ना और प्लस एज ब्रैकेट भी देखो भाई आई थिंक दीज आर स्टिल वेरी यंग प्लेयर्स. I would genuinely believe that at some point, they will come really good. अब वही है, especially when we don't have many leaders in the park. I thought Enzo Fernandez का leadership skill is something which is needed in the park because I think ये next level. और I'm again saying guys, ये as much as Chelsea media अभी सडन से बहुत हेट दे रही थी 1.5 सालों से अभी से सडनली भाई पामर भगवान है ये है Chelsea why they are coming they are the thing. I totally get it. I'm liking it. लेकिन इतना ज्यादा भी मत करो क्योंकि भाई एक न्यूकासल से हारेगी वापस से पैनिक बटन्स will be hit. तो I still believe in our experienced players. Again मतलब at least 1 hour of Reece James. I'm expecting or hoping कि इस गेम में वापस से you would expect and he's not had the best game against Newcastle as well as had good games against them. पता नहीं लेकिन why in the title does it say Chelsea back because Chelsea is back supposedly but does it mean कि back at the very top? No, back with the win bhai after Panathinaikos just saying but I don't know. Predictions हो जाए guys. Newcastle United away at Stamford Bridge. Newcastle pretty much defense is a problem for Chelsea. Chintan expecting Newcastle score करेगी कि नहीं? No, yaar. Actually, they've been struggling quite a bit. Yeah, I feel it's. I saw the Brighton game. I was very disappointed. Gordon बहुत miss कर रहा है chances. Yeah, बहुत ही under confidence है. उसको number 9 खिला रहे हैं. मतलब on paper, Joelinton, Tonali, the midfield is actually quite good on paper. To be very honest, Bruno and all three of them are quite good. But वो convert नहीं हो रहा है. They're running out of steam. I feel it's straightforward. I think Chelsea are pretty good right now. They press well. They have 2 midfielders who are pretty used to. They're good press resistant players, Lavia and Caicedo.
So just what you said is I agree, but I feel Lavia is probably one of the naturally more gifted midfielders compared to Enzo and Caicedo. I feel Lavia has a way higher ceiling for me. भाई लेकिन एक Lavia, सबप्लॉट भी है ना गिमारेश वो और है एंजो ना, फर्नांडिस का, मतलब आप देखो वो भी है, अर्जेंटीना ब्राजील वाला सीन है इसमें, मतलब या गिमारेश, and I'll be honest, I think he is one of the dirtiest players in the Premier League in yeah, terms of, he you know what I is, mean, dirty, not dirty, he's yeah, a I great know, player, got it. ठीक है But you know, जो I don't see Newcastle scoring much. I feel it's a even if they might just go consolation goal hoga where Chelsea might just let the guard down. But I see a 2-0 or a 3-0 win for Chelsea. I hope wow. Palmer scores. I love to see him celebrate. यार बहुत मजा आता है उसको celebrate करते देखते. I love the name Cold Palmer, you know, and I love it how it's getting to other fan bases also. Like as in, I can see people are अरे he's not that great. एक game Liverpool में नहीं खेला था. I saw memes coming out. I love it when players are so unaffected by all these things and he still performs, you know. So I'm going. I hope he scores. I hope Nkunku comes on and scores. So I'm expecting a pretty straightforward game. To be very honest, don't expect much from Newcastle. Fair enough. I believe Lala has to go as well as Suchit has left, but koi nahi, they'll be joining. Guys, again, do not forget to check out the panel's channel in the first line in the description. Definitely give them love as well as us. क्या बात है भाई, सब लोग likes की कमी लग रही है. I understand Manchester United fans कुछ नहीं है at this point in time, but Chelsea fans मेरे भाई आ जाइए सब लोग. Do not forget, and yes, we are discussing Serie A, and don't worry, La Liga El Clasico will be discussed in a separate video as well, which is in the works. Newcastle, लेकिन मैं I'll be, I don't know, मेरा गद्दा वाला फीलिंग आ रहा है इसमें. Obviously, I would want like anything Chelsea victory वापस in the Premier League and get a streak of victories. लेकिन मुझे लगता है Newcastle getting back-to-back losses in the Premier League जब उनके पास यूरोप नहीं है, I don't know. Can I see that realistically? I don't see that. Unfortunately, मुझे लग रहा है it be a draw. I don't know. Kick-off conversation. Would you agree, disagree? क्या बोलते हो? भाई चेल्सी विन यार, चेल्सी विन. आई थिंक के शायद न्यूकासल स्कोर कर ले. आई थिंक कॉन्सोलेशन इट वुड बी. आई क्योंकि हमारी डिफेंस में देखो ना, कॉलविल हैड अ बैड गेम अगेंस्ट लिवरपूल, ठीक है, और आई नो मिडवीक में खेला नहीं, रेस्ट दिया गया, एंड फोफाना इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी बैक, कुकुरेया इज बैक इन प्रीमियर लीग, इट हेल्प्स. लेकिन अभी भी हमारा बैक फोर प्रॉपर, मतलब वो बैक थ्री हो जाते हैं. ब्रीज जेम्स / गुस्तो कौन खेलेगा? इफ्स एंड बट्स है. गुस्तो डिफेंसिवली हैज इश्यूज, अटैकिंग ब्रिलियंट साइनिंग लास्ट सीजन, लेकिन I think Kukurea is probably the best defender in the back four, if you really ask me, सच में बोलूं तो. और Caicedo और Enzo and here जो चिंतन बोल रहे थे और बाकी लोग बोल रहे थे that it probably makes sense to play, you know, Lavia and Caicedo because of the defense. लेकिन वही है ना, are we going to be a little bit too negative वहां पर? क्योंकि yes, second half में हम better किए, but the longer the game goes on against Newcastle kind of team, एक feeling आती है भाई they are exact the counter team. काउंटर पे मारेंगे भाई, वो वाला फीलिंग आता है. आई डोंट नो व्हाई आई हैव दैट. गॉर्डन इजाक, लेकिन उनका स्ट्राइकिंग जो है ना उतना ज्यादा चल नहीं रहा. एज डिफेंसिवली भी वो उस तरह से जितना आप लास्ट सीजन देख रहे थे ना, या उससे प्रीवियस सीजन न्यूकासल को, वो वाली न्यूकासल आपको इस सीजन नजर नहीं आ रही. तो यहाँ पे ball is in Chelsea's court. I would say this is Chelsea's game to lose. यहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है. So I guess and we are playing them twice. कप में भी उनके साथ है by the way. Following week. कप खतरनाक हो सकता है. कप खतरनाक हो सकता है. But Premier League में I guess Chelsea. अरे भाई. Arth agreed. मैं अकेला बोल रहा हूँ. Safe. चलो. नहीं. I think it will be Chelsea. चलो, I was trying to do a Liverpool fan, if you know what I mean, but कोई नहीं. Chelsea तो गाएंगे भाई. Come on Sunday where we will do the watch along as always. लेकिन यहाँ पर other games, I don't know if there are any other games where West Ham Man United का हमने बात कर लिया था. Then we discussed obviously the Arsenal, Liverpool and Chelsea Newcastle game. Pretty sure Man City का Southampton, if I'm not wrong. Southampton. कितने goals मारेंगे is a big question. Southampton home. Haaland is going to be my FPL captain, so yes, मैं. भाई Stones को खिलाएगा स्ट्राइकर. Stones को खिलाएगा स्ट्राइकर. If Eric Ten Hag was managing Man City, then John Stones would have been the striker. So it's okay. But कोई नहीं. Thank you football freak as well and others as well. Chelsea defense is shaky, मुजामिल बोल रहा है. I totally agree, but I don't know. Crystal Palace Tottenham guys, वो ये एक है London derby. That Crystal Palace are not doing well surprisingly. पता नहीं ऐसे को करना था एक ही गोल सीजन में, Chelsea का अगेंस्ट करना था.
तो that could be a potential banana skin, especially क्योंकि यूरोपियन टाई था टॉटनहम का, where I know they did well, जबरदस्त 1-0 victory था, तो I think that is a potential surprise. आप लोग बोलिए any other surprise? मैं देखूं तो I'm not sure any of the major surprises दिख रहे इस weekend, right? I don't We know. should be Aston Villa versus Bournemouth. Bournemouth basically are doing well. आप देखिए तो last Coming from a weekend good win against Arsenal, I think Yeah, confidence correct, उनका correct. काफी sky high होगा. अच्छा मैच हो सकता है ये वो मैच. ये यूरोपियन टाइज है, टॉटनहम एस्टन विला काइंड ऑफ टीम, सो दे माइट काइंड ऑफ थोड़ा बहुत लेकिन आई हैव टू गिव इट टू एमरी यार, कांट रियली भाई हम एंड करने वाले स्ट्रीम इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, उससे पहले ऑब्वियसली यहाँ पर चिंतन जुड़े हैं, तो थोड़ा बहुत आई विल लाइक टू स्पीक अबाउट सेरी A एज वेल फॉर पीपल. यस, देयर आर बिग गेम्स वहां पर. आई डोंट नो चिंतन, मिलान क्या लगा भाई अपना मिडवीक में? आर यू कॉन्फिडेंट नाउ? All of a sudden, I thought we were lucky in the first 20 minutes. Honestly, मैं बोलूँ तो, सच में बोलूँ तो, touch your heart and tell. Yeah, of course. We were very lucky in the first 20 minutes, and you could see the nerves. It was a potential knockout match for Milan. Lose this and probably out of the running. So, very cautious approach. Red card was also unlucky. I feel it wasn't a red for me. Just unlucky. But, I just was happy to see Liao perform well. I just saw some great... he had that freedom. I think European games are a little different. He's always double marked when he plays in the league. So it was good to see him perform so well, and there's so much pressure on him. He gets subbed off for Portugal. He plays like a king, So the manager has उसके ऊपर आई ग्लास है यार, थोड़ा उसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस हो रहा है, बट नॉट वेरी कन्विंसिंग. बट एज आई सेड, अभी ऐसा सिचुएशन है भाई, अभी विन दे दो यार, थोड़ा 3-4 मैच ऐसे ही निकल जाए, मैनेजर को थोड़ा रन मिल जाए थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स का, तो प्रॉब्ली कॉन्फिडेंस भी प्लेयर्स में आएगा. यू कैन सी इट यार अंकित, प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस भी बहुत कम है. थियो एंड लियाओ आर टू बिग प्लेयर्स. यू सी दे बोथ आर रनिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस, सो थोड़ा मोमेंटम मिलेगा तो अच्छा होगा यार. बट बाय द वे, Bologna will not be easy. No, Bologna Milan just got confirmation. Match has been postponed because of floods in Bologna, heavy rains. Yes, there was news. तो भाई ये तो postpone हो गया, तो welcome break भाई. Napoli next है, तो we can definitely prepare well. Unfortunately, because of that, Tijani Reinders and Theo were suspended for Bologna game, so now they will be suspended for the Napoli game. No. Yeah, Theo being suspended against Napoli is I was very happy with the rest, but when you have your इतना छोटे स्क्वाड में अगर ऐसे सस्पेंशन हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड. भाई यस, बाय द वे आई डोंट नो व्हाई यार, लास्ट वीकेंड उसको रेड कार्ड मिला था ऑब्वियसली रेंडर्स को, बट कोई नहीं. आई थिंक कौन है, यूनुस मूसा आएगा, आई एम अज्यूमिंग. Yeah, Loftus-Cheek आएगा यार, Loftus-Cheek आएगा, not Musa. You are playing Loftus-Cheek and who else in midfield? Pulisic will play number 10. Chukwueze will play on the right then, I guess. Fofana and RLC खेलेंगे, probably behind. Musa पे इतना confidence नहीं है उसको as of now, so I'm expecting that. Pulisic has been what to say, man? I'm running out of words for Pulisic. So confident, even for international, amazing confident. What a skillful player. And you see his age is only still young. Yeah, he started off at 17, so a new life for him. Amazing player. बट वही है ना, टचवुड अभी तक इंजरीज हैव नॉट प्लेड अ बिग पार्ट इन हिज मिलान करियर. हैविंग सेड दैट, आई थिंक लॉफ्टस-चीक का जो बोला ना, आई मस्ट से कि मिडवीक में ही हैड अ बैड परफॉर्मेंस. मच एज आई एम अ लॉफ्टस-चीक फैन, फॉर पीपल हु नो मी. लेकिन अगेन इंटरेस्टिंग बिग गेम ऑब्वियसली एक और है इन द वीकेंड इन द सेरी A एज वेल. in Inter against Juve, right? Correct me if I'm wrong. Inter Juve, yes. Inter Juve, पता नहीं, मतलब किक ऑफ कन्वर्सेशन पूछते हैं, बट इंटर मिलान जनरली एज अ टीम, मतलब जो हम बात करते हैं ना अबाउट लिवरपूल कि दिस सीजन दे आर लुकिंग लाइक द टीम जो दे कैन काइंड ऑफ स्कोर गोल्स एंड आप सिट बैक भी कर सकते हो. इंटर मिलान एक ब्लूप्रिंट है उस दैट काइंड ऑफ टीम का. आई जेन्युइनली बिलीव इट, डिस्पाइट हमने जीता था उनके साथ मिलान डावी, बट Juventus, I don't know if you got a chance to look at the midweek fixture जो उनका था against Stuttgart at home. They lost. बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था, घटिया मतलब घटिया to the power of 10. I was shocked. Thiago Motta football, what happened bro all of a sudden? तो Inter Juventus, it's all the way Inter looking like it, कहीं ना कहीं being in third gear. होना तो चाहिए, मेरा ख्याल है इंटर को जीत जाना चाहिए. अगर ऐसी परफॉर्मेंस के बाद जुवेंटस अगर वैसा खेलेगी तो फिर तो इंटर नहीं छोड़ेगी मेरा ख्याल है. और
डिफेंसिवली तो हम मतलब ओवर द इयर्स नो इटालियन टीम्स हैव बीन नोन फॉर देयर डिफेंडिंग, बट यहाँ पे इंटर मिलान अगर देखें तो वो डिफेंसिवली तो साउंड थे ही, अब वो अटैकिंग वाइज भी काफी साउंड हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है मुश्किल गेम होगा यूवेंटस के लिए. इंटर मिलान शुड विन दिस वन. नहीं बिल्कुल. इनफैक्ट कमिंग बैक टू चिंतन, मतलब यूवेंटस, they have been unbeaten the entire season in Serie A, right? If I'm not wrong. Yeah, they've not और conceded अभी also. हाँ एग्जैक्टली नॉट कंसीडर्ड इनफैक्ट. अभी बेसिकली इस रिजल्ट के बाद में, एंड ऐसा नहीं था कि अगेन इट वाज वो टिपिकल काउंटर पे मार दिया ऑपोजिशन टीम ने कमिंग टू यू नो देयर स्टेडियम इन टू, इट वाजंट दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस. इट वाज अ परफॉर्मेंस वेयर एट होम, मतलब उनको बेसिकली पेला गया ऑलमोस्ट. Stuttgart probably should have scored more arguably, right? तो there's got to be some major changes यार. मतलब आपको लगता है कि यार, आप बोलोगे नहीं, but in Serie A they've done fairly well. Inter Milan in town, tactically they have to change something, नहीं? First of all, यार यूवेंटस मैसिव इंजरी क्राइसिस, उनका मतलब पूरा लाइनअप चेंज करना पड़ा था. देयर बेस्ट center back Bremer got ligament. First of all, it's just very sad that throughout the season in every league कितने ACL injuries हुए हैं यार. It's very sad with the number of fixtures coming in. So Juventus massive injuries issue, उनके बहुत इश्यू चल रहे हैं. By the time when they were playing well, उनका Leipzig के सामने जो गेम था 2-0 down, they won 3-2. Things were going well and then just started getting so many injuries. And they bought someone like Coop Miners, इतना पैसा डाल के अटलांटा से buy किया, and he's out injured. Nico Gonzalez. So basically, it's just that all the new buys, all the new players they've bought are probably out. Lot of changes. Yeah, but you know, you have to give it to Sebastian Hoeneß. Stuttgart is an amazing team. You know, सब लोग बहुत underestimate करते थे उनको. Generally, and after selling so many players in the market, they're still very good. And not just Juventus, I think that they should have beaten Real Madrid also. Outstanding game against Real Madrid. Correct. First 1 hour के लिए they were the better team. Amazing. It was just very shocking that they were not up against Real Madrid, and of course then it's Real. Stuttgart ran out of steam. We thought will happen against Juventus. Penalty भी miss किया Stuttgart ने 93rd minute पे उन्होंने winner मारा था. So Juventus का तो I understand lot of injuries issue है, but Inter again a lot of injuries, but Inter, I've been saying it since the past 2 seasons now, that Inter is probably one of the best. I can't say player wise they have the best players in the world, but tactically they are the best, one of the best teams in the world right now. If you ask me, top 3, top 4 clubs, they can. You saw the game against City at home. You saw the finals also. It was not one-sided. On the contrary, finals I think Inter first half should have been up, and even against City at Etihad, Inter were, the way they were transitioning so smoothly, outstanding. It was a shock for someone else, but me seeing Inter and itne hare 6 derbies back to back hare, so I don't know how Inter plays. Amazing. So they are probably one of the best without the ball in the world right now. Any team without the ball, out of ball possession, they are amazing. But they have missing probably Hakan. And you know, actually 2-3 podcasts में कई जगह ने बोला था that Hakan is probably one of the best number 6 in the world other than Rodri. It is actually true. If you go to see how well he's transitioned from an 8 to number 6, like Gravenberch, people don't realize last season उसने बहुत अच्छा transition किया है. So मैंने तो लास्ट सीजन इतना मैं बोल के थक गया कि with all due respect, yes, Barella is getting the hype, but Barella is the number 8 really. The guy who's actually calling the shots is Hakan, and I totally agree with you. Amazing. And Hakan against against City was मक्खन बोल सकते ना वो, और Zielinski and Barella क्या बॉल निकाला. It was Zielinski का एक था बॉक्स में, he dribbled past 3 players and in 2 minutes they were on the opposition, and Mkhitaryan missed an easy goal, like not an easy goal but should have scored that one. So Inter are a very formidable team yaar, with the injuries also. I think Simeone Inzaghi and जैसे कुंवर, like I think he's heavily linked with United, and trust me वो मार के सिखाएगा प्लेयर्स को. मतलब he's that kind of a manager, वो मार के सिखाएगा तुम लोग को कैसे खेलना है, because structurally and he's so amazing. And of course one more, I think अभी काफी सारे लोग को पता है Bastoni is probably one of the best center backs in the world. Amazing yaar. Top 3 center backs in the world right now. Amazing. And when it comes to back 3, there's no one better than वो जो बॉल को कैरी करता है बाहर, you know.
a lot of Italian defenders. I these think are- DiMarco is able to do what he's able to do because of Bastoni, because Bastoni of literally course. covers two positions. Yeah, exactly. And जो अभी जो Califury public देख रही है, जो वो बॉल को इतना कैरी करता है, जो Italians usually are very comfortable with ball at their feet also as a center backs. So you are probably seeing this new generation of Italian center backs who are very comfortable with ball. There's another very good center back at Napoli called Buongiorno. So Italians are very Link भी blessed था with- काफी. Yes, very beautiful, very amazing, gifted center backs. So yeah, very difficult for Juventus to do well against So Inter. bhai, all of us are going with Inter. Parth, what's your score prediction? Inter versus Juventus. I haven't watched Juventus play इतना, but Inter को देखा है मैंने, and I Difficult think to beat. with all the injury concerns, 2-0. 2-0, चलो Fine. go with it. Yeah. Guys in the chat, आप लोग भी बोलिए. I'm pretty sure we are agreeing with that. लेकिन guys, again, जो भी लोग देख रहे हैं, we have discussed literally, I think 3-4 प्रीमियर लीग गेम्स बहुत ही चार्ट लिया डिटेल में, हमने डिस्कस किया है. UEL, UECL, as well as obviously यहाँ पर थोड़ा बहुत Serie A for people. La Liga watches especially, I know Barca, Real Madrid fans. El Clasico अलग से कर रहे हैं हम वीडियो, that is already in the works and it will come first thing in the morning. तो जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button, also subscribe to all the channels which are there linked in the description, including ours, but more importantly the panel. लेकिन again हम लोग रहेंगे live also on Almighty Sports, because वहां पर बवाल मच रहा है क्रिकेट, not great बवाल लेकिन गंदा वाला, जो हमें बात करना है पेंडिंग. कल लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं Almighty Sports में, उसका लिंक भी है नीचे इन डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लाइन, बट संडे को यहाँ पर वॉच लॉन्ग है एंड प्रीटी श्योर बाकी चैनल्स भी यू कैन सी द कंटेंट. कैल्सियो चर्चा, किक विद लाला, किक ऑफ कन्वर्सेशन एब्सोल्युटली, एज वेल एज द फुटबॉल शोडाउन एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स. गाइस अभी के लिए इतना ही है, बट यू नो व्हाट टू डू. ऑफ कोर्स Chelsea अब द Chelsea, लेकिन एंड फोर्जा मिलान, बट आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल विल बी क्रेजी, और वेस्ट हैम मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं ना कहीं साकी को डाबी होगा कि नहीं. वी आर ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्मी. कम ऑन मैन, टेन हाग इन हो जाए भाई. Ten Hag in. चलो गाइस, सी यू सून. एंजॉय द एल क्लासिको एज वेल. बाय. Thank you, bhai, for the Bye. invitation. Thank you for having us. Thank you.